Class 8, 14.1, question number 3. Now we have to take up factorizing by grouping. See, till now we had done in the previous questions factorizing by taking common from as many terms were given. Okay, 2 terms, 3 terms. Now in this question, if you observe out here, x square, xy, 8x, 8y. तो उसमें हम क्या कर रहे थे अभी तक? we were looking for factors which are present in all the terms. Now in this particular question, if you see you have x here, x here, x here, but not here. एक भी term में नहीं है तो आप सबसे common नहीं ले सकते हो. Then y is present in the 2 terms but not in these 2. 8 is present again in 2 terms but not in these 2. So in such questions, if you have even number of terms, जैसे यहाँ पे 4 terms हैं, तो आप group बना के करते हो. Maybe after grouping it, we can get common, like is happening here. If you see the first 2 terms, from the first 2 terms you have x present in both. So I have taken that x out. That x is common. So what happens? Out of x into x, 1 x gone, 1 x remains. x gone, y remains. तो x plus y अंदर बच जाएगा अगर आप इन दोनों में से x common लेते हो, right? From the other 2 terms, third and fourth term, you see this also has 8, this also has 8. So that 8 can be taken common. If you remove 8, you are left with x here, and here you're left with y. So what are we observing? We have got x plus y here as well as x plus y here. So if such a case arises that after grouping, certain things can be taken common and the leftover is coming exactly the same again. अब यहाँ पे भी x plus y आ गया, यहाँ पे भी x plus y आ गया. तो अभी हम क्या कर सकते हैं? We can treat this as a first term, this whole as a second term, and from both these terms we can take x plus y common once again. Okay, तो ये group same बनना ज़रूरी है. Alright, after grouping 2 together and taking common, उसके बाद जो left over है ये भी same आना चाहिए, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा. अगर ये different है तो again you are stuck. Okay, so if you have got this similar, now this will be taken common. So x plus y हमने common ले लिया. अभी यहाँ से x plus y हट जाएगा तो what remains? Only x. From here if x plus y is gone, what remains? Only 8. So ये 8 यहाँ से आ गया, यहाँ से x आ गया. So inside you are left with x plus 8. एंड x प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया था. सो यू कैन सी फैक्टर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे नंबर्स या एक्सप्रेशंस जो मल्टीप्लाई होके बड़ा एक्सप्रेशन देते हैं. सो यस, दिस एंड व्हेन ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, वी नो दैट. ओके, सो वन फैक्टर एंड द अदर फैक्टर, दीज आर द 2 factors. Okay, so in all these questions this is what will be happening here. Okay, so this I had made a mistake in writing here. Okay, so your third question was ax plus bx minus ay minus by. तो अभी इन दोनों में आपको दिख रहा है कि सब में कुछ भी कॉमन नहीं है. सी a is in 2 terms, b is in 2 terms, x is in 2 terms, y is in 2 terms. There is nothing which is in all the terms. Okay, अगर सब में होता तो वो भी हम ले लेते of course common, जैसा हम अभी previous questions में करते आए हैं. But in this case, there is nothing we are getting common in all 4 terms. So we've got to group them. So from the first 2 terms, x can be taken common. See, you have x here. So that x I have taken out. If x gone, a remains here. X gone, b remains here. अभी यहाँ से क्या है? Again, you have y here. And you also have minus sign here and minus sign here. तो एक तो हम minus sign common ले सकते हैं और y. तो माइनस एंड y हमने हटा दिया, व्हाट रिमेन्स? a. माइनस एंड y गॉन, व्हाट रिमेन्स? b. तो अंदर बच गया हमारे पास a प्लस b. ओके, सी माइनस अगर आप कॉमन लोगे ये प्लस बनेगा. मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? माइनस प्लस गिव्स यू माइनस. ओके, सो ये माइनस अगर चला गया तो अंदर क्या रहेगा? प्लस. राइट. ओके, सो नाउ अगेन ये आपका सेम फैक्टर आ गया. सी, यू हैव a प्लस b हियर, you have a plus b here as well. So a plus b will come out to be common and this will be left as x, and यहाँ से a plus b गया, minus y बचेगा. Okay, so these are your 2 factors, a plus b and x minus y. Okay, so it's a simple concept. You just need to focus a little bit, all right, and see how and where can we take common. All right, now the next question was given as 15pq plus 15 plus 9q plus 25p. अभी इसमें भी सेम स्टोरी हो रही है. सी 15, 15, 9, 25. इसके फैक्टर्स में 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है. इनमें दोनों में 5 भी है, 3 भी है. बट देर इज नथिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑल द टर्म्स. नो नंबर विच इज कॉमन टू
15, 9 as well as 25. Okay, then likewise P is here and is here. In दो terms में नहीं है. Then you have Q here and here but not in the other two terms. So there is nothing which is common in all the four terms. But now again, if you group, अभी grouping में कोई कहेगा कि okay, let me take first two together. If you take first two together, 15 and 15 will come common and you'll be left with PQ here and plus 1. अगर ये पूरा चला जाता है तो 1 रहता है, because taking common means multiplication is coming into action. So 15 ones are 15, तो 15 पूरा चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1. ओके, सो आपका बच रहा है PQ plus 1. अभी इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? कुछ भी कॉमन नहीं है. ओके, सो ऐसे भी हम कॉमन नहीं ले सकते हैं कि यहाँ से तो आ गया फिर यहाँ से कुछ नहीं आया तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे. तो इन सच क्वेश्चंस इफ ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको थोड़ा रीअरेंज करके देखना पड़ेगा. मे बी व्हेन यू रीअरेंज देन यू गेट समथिंग कॉमन. ओके, लाइक इज हैपनिंग हियर. इफ आई रीअरेंज दिस, सो इट्स 15 PQ के साथ मैंने 9 Q ले लिया है, बिकॉज इसमें भी Q है इसमें भी Q है. ये 3 and 3, इसमें भी 3 का मल्टीपल है इसमें भी 3 का है. सो दिस विल वर्क. एंड देन अगर हम इसको 15 and 25 को साथ में रखते हैं तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है. या तो कुछ ना कुछ तो कॉमन है एटलीस्ट. ओके, सो इफ आई हैव अरेंज्ड इट नाउ, सी जैसा ये गिवन था उसमें अगर हम फर्स्ट टू एंड लास्ट टू रख रहे थे वी वर गेटिंग नथिंग कॉमन. तो वी हैड टू स्प्लिट देयर, switch over their places. Right, now if I've rearranged, I've written 15 9Q first and 15 later, तब हमारा common आ जा रहा है. So from the first two terms now your 3 and Q has come common. So 3 5 is 15, तो 15 में से 3 gone means 5 still remains and Q gone means P still remains. And 3Q गया, so 9 में से 3 रहेगा. Okay, so that is your factor. Now from the other two you can take 5 common. 5 3s is 15, 5 5s is 25. तो यहाँ पे एक 5 बचेगा and of course P बचेगा. बट इसके बाद भी अभी हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो ये लेफ्ट ओवर है is it coming same or not. So here you got 5P plus 3. Here you're getting 3 plus 5P. But that is one and the same. Okay, 2 plus 3 is same as 3 plus 2. Commutative होता है. Okay, so because of that we know that whether I write 3 plus 5P or I write 5P plus 3, it's one and the same. And if it is the same, you can take it common once again. So अब ये common, ये वाला factor common था, हमने बाहर रख लिया 5P plus Q. So if this goes, you're left with 3Q here. If this goes, you're left with 5 here. So these are your two factors. Okay. Alright, so I've done it alternate also out here, children. Okay. In this now if you see, rearranging में, as here मैंने flipping की थी between 15 and 9Q. So you could have maybe किसी के, it depends upon आपके दिमाग में क्या आ रहा है, but the thing is it should work. Okay, so maybe someone could have taken 25 here. Okay, 25 and 15 इनकी flipping भी कर सकते थे आप. तो अगर आप वैसा करोगे तो 15 PQ plus 25 P, 9Q in its place and इसकी जगह आ गया 15. ऐसा रीअरेंज करके भी कॉमन आ जा रहा है. देखो यहाँ P है यहाँ P है, वी कैन कीप इट आउटसाइड. फ्रॉम 15 and 25 वी हैव 5 कॉमन, सो 5P कॉमन आ जाएगा आपकी बार. सो व्हाट विल रिमेन, 5 3s are 15 and Q will remain here. Then 5 5s are 25, P तो चला गया था. राइट, फ्रॉम द अदर टू ऑल्सो वी आर गेटिंग कॉमन. दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 कैन बी टेकन कॉमन. सो 3 3s are 9, Q remains and 3 5s are. अभी ऐसा करके भी जो आपको अंदर चीज मिली, दैट इज 3Q plus 5, वो सेम मिल गई, कॉमन मिल गई. तो even this will work. We can take that common now. So 3Q plus 5 common. What remains here is 5P and here 3. Okay, तो सेम फैक्टर्स हैं, आगे पीछे आगे, दैट मेक्स नो डिफरेंस. ओके, सो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो आपको स्ट्राइक करे. बस एम हमारा ये है कि हमें कॉमन ले सकने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. तो जहां से कॉमन आ सक रहा है आप वहां पे वैसे अरेंज करके ले लो. Got that? Okay, so same way in the fifth one also. Okay, I've done it for you. Now I think I will not explain it. I've done enough explanation because the videos also become too huge, then they create problem in uploading. So you can yourself 2 ways, मैंने 2 ways में arrange करके आपको दिखा दिए हैं. इस working को खुद समझने का you all try. Okay children?